And also the lineup for today looks like this, viewers. The horrific gang rape of the law student in Bengal has sparked protests. BJP workers detained. TMC links of the prime accused are under scanner. There's another case of a crime against a student reported from an IIT campus. This time it's IIT Madras we're talking about, raising questions on the safety of women in campuses. Also, as RSS stokes the preamble debate, it's Vice President Jagdeep Dhankar who has joined in. And we'll tell you on the show, we are, I'm told that we have the interaction of Group Captain Shubhanshu Shukla with the Prime Minister right now. We are just going to play that out. And also, before that, let me just tell you, we have the news on Shefali Jariwala's death. There is post-mortem that has been completed, and we will show you more updates. And then a I can speak, let me please speak, producers. 32-hour long traffic jam turned tragic for the people in Madhya Pradesh. What really happened? We'll give you a ground report on that. And finally, Trump again talking about tariffs and trade. Viewers, the trade tango continues. He's again spoken about tariffs and the trade deal with India. We'll get you all these updates on the show. So Prime Minister Modi has spoken to Shubhanshu. As I told you in the beginning, viewers, Group Captain Shubhanshu Shukla, remember, is the first Indian to go to space, the first time after 41 long years, and he's the first one to set foot on the International Space Station. Okay, we'll try and get what the audio is. It's only a video that we have of it now, I think. Or is it a still? I don't know. It's a still. It's a still from the space. Shubhanshu Shukla, Group Captain Shubhanshu Shukla, first Indian on the ISS. And you can see the Tiranga on the International Space Center. First time the Tiranga, the tricolor, the Indian national flag at the International Space Station. And the Prime Minister all smiles, and of course all the reasons to smile and be proud, of course. And there you have the Prime Minister also very excited to speak with the Group Captain Shubhanshu Shukla. After 41 years, we see this moment, viewers. Back in 41 years ago, Wing Commander Rakesh Sharma interacted with former Prime Minister of India, Indira Gandhi, saying, "Sare jahan se acha Hindustan hamara." And now we're all curious to know what really Group Captain Shukla told the Prime Minister, Narendra Modi. He's the first Indian on the International Space Center, and for the next 12 to 13 days, is going to be there at the International Space Station. And just stay on with us, viewers, because in just a few moments from now, we're going to play out that video, that interaction between the Prime Minister and Group Captain Shukla. And remember, this is the Axiom 4 mission, and this is a historic mission in itself. At least 60 experiments will be conducted. Group Captain Shukla will be conducting 7 experiments. Senior Executive Editor Abhishek Kapoor joins us on the phone line for more. Abhishek, well, this is a moment that takes us back to 41 years ago, and Prime Minister all smiles, Group Captain Shukla all smiles. Well, yes, and in a bit we are also going to get the video in which the interaction plays out with Prime Minister and the astronaut having a conversation. We are told that it should be out anytime soon, and Rakshita, the point is that this is a seminal moment in India's journey to, I believe I have actually got the video, and yes, I think we have the video of the conversation between Group Captain Shubhanshu Shukla. This is going to be playing out at 6:30 p.m. I am told. So that's the breaking news development. Another 25 minutes from now, 6:30 p.m. is when we are going to hear the interaction between Prime Minister and Shubhanshu Shukla. But the point is that, as I was mentioning, this is a seminal moment in India's journey towards having a permanent station up there in the space. It's a seminal moment in the journey of India towards becoming a space power, and to have, like in the case of China or in the case of United States, an independent space program
This is obviously a significant leap in that direction. Though, of course, this is through a private platform like Axiom and the joint mission between SpaceX and NASA. But the fact of the matter is that the tremendous amount of learnings that India and India's space organization ISRO is going to have by the end of the mission, it's going to add tremendous momentum to our space program. In fact, next year, it's likely that, like we are seeing Shubhanshu Shukla, who's of course going to be part of the same team that's going to be going up in space on our own through an ISRO rocket that's part of the Gaganyaan mission. I think there is tremendous amount of takeaways. There are tremendous amount of takeaways, lessons, learnings, which would obviously be incorporated in our own Gaganyaan mission program that pans out over the next year. Some of that would be reflected in the conversation that has happened between Prime Minister Modi and Shubhanshu Shukla. We have to wait about 20 more minutes to hear that conversation, and then we will come back. Right, right, Abhishek, of course. It's going to be interesting to see what is the interaction like, what exchange happened between the two as the Prime Minister interacts with Shubhanshu Shukla, Group Captain Shukla, and in just a few moments from now we're going to get that video as well. Jai Hind from space, we call it as it's Tiranga for the first time at the International Space Station. We see Niranjan Narayanaswamy, Executive Editor, joins us from the newsroom. Niranjan, of course, it's a proud moment for everybody. Prime Minister also swelling with pride, isn't he? Well, absolutely. I mean, I think his expression gives it away. And let's stay on that picture. Now, Abhishek says that roughly around 6:30, we should get that entire interaction lasting a few minutes. We don't know the exact duration of that conversation, but we are standing by. Some reports saying that as early as 6:15, in about 6 minutes from now, we should be able to get that first video of the interaction between Prime Minister Modi and, Group Captain Shubhanshu Shukla. He's been, he's given at least 3 to 4 messages since that liftoff, the Axiom 4 mission. He's the pilot, along with an American commander, and he's got a Polish and Hungarian, astronaut colleagues with him on this mission. And look at every message that he has sent out from space. An Indian Air Force pilot who's fought, who's flown for our country. Some of the best fighter jets is on board the Axiom 4 mission, which, docked at the International Space Station 2 days ago. He said in the last few days he has spoken, of course, when that first interaction on the day of docking took place, in his first interaction, he did talk about, what a wonderful ride it was and how expectations had been surpassed. But the crux of every message that he's given out so far, Rakshita, has been about the nation, about the country, and how much this journey of his to the International Space Station is about India's big leap in the space front. Of course, a precursor to Gaganyaan, which is coming up next. That is the big mission for him included, and India, as we watch out for India's space mission in the next few months. But waiting for this conversation, more details to come out. He has said in the past that it's been a wonderful ride, expectations surpassed, and he's spoken about the kind of challenges that astronauts face in space. He's astronaut number 634. He's the pilot of the Axiom 4 spacecraft. Let's wait for the next 3 to 4 minutes, I think. Right, Niranjan, right. Thanks so much. We, of course, will be waiting to play that out once it's released. So viewers, just stay on with us. That we will be breaking into that video right away. But now we're tracking the biggest story from Kolkata, from West Bengal. There is anger that is palpable, viewers, on the streets of Kolkata, across West Bengal. Bengal BJP chief and Union Minister SUKANTA MAJUMDAR has also been detained due to the protests. He was taking part in this massive BJP protest against the gang rape of a first-year law student inside the college campus. In fact, the incident has sparked a statewide outrage. Political tensions are also on the boil. There is a blame game, as usual, as we see that is unfolding. And meanwhile, viewers, there are reactions coming in. The Law Minister has also reacted. The Law Minister, Arjun Ram Meghwal, has spoken out against the West Bengal government on the same. Listen in.
वेस्ट बंगाल में पूरी कानून की व्यवस्था बिगड़ी हुई है और जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसके कारण और बिगड़ते जा रही है। उसी का ही ये परिणाम आपको देखने को मिला। और आप सवाल मेरे से इसलिए कर रहे हो कि भाई मैं देश का कानून मंत्री हूं, तो मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूं जो मुझे जानकारी मिली है कि ये अपीचमेंट पॉलिसी के कारण इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो रही है। ये बंगाल के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, कलंक है बंगाल पे। So viewers, there are more reactions coming in right now. Controversy erupting over Akhilesh Yadav's comment as well. Listen to what Akhilesh Yadav said. मैं बंगाल के लोगों से और खासकर आदरणीय मुख्यमंत्री से कहना हूँ, बहुत सावधान रहिए बीजेपी से। कोई भी घटना होगी, अगर आप निष्पक्ष भी कार्रवाई करना चाहेंगी तो उससे पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं बीजेपी के लोग। आए दिन यहाँ बलात्कार हो रहे हैं यूपी में। आप सोचिए, अयोध्या सबसे पवित्र धरती, वहाँ बलात्कार हो गया। लखनऊ में बलात्कार होते हैं, कहाँ नहीं होते। और महिलाओं की छेड़खानी में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार कानून व्यवस्था के अलावा सब पे ध्यान दे रही है। पत्रकार क्या कर रहे हैं, नेता लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है। तो अगर कानून व्यवस्था पे ध्यान नहीं देंगे तो यही हालत होगी। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है सब चीज़ों में। Vishakha is joining us live on the broadcast for more. Vishakha, tell us more details. What are you picking up? Because the matter has also reached the court, and there are horrifying details that are emerging in this entire case, and especially the TMC link of the prime accused is under scanner. Yes, absolutely. And right now I'm standing in Goliahat. You can see that it is the place a short while ago where SUKANTA, the state BJP president, has been detained from here only, and he has been taken to Lal Bazar, the headquarters of Kolkata police, and he has been there also. In Lal Bazar also there is agitation, and in this area, I mean in Goliahat, where he was detained from, he was when he was taken, there were 3 prison vans who took, even when he just landed in the road, and he didn't even reach Koshba. You need to go straight from here, and you need to cross Bijan Setu, and then only the Koshba Law College comes, which is the place of occurrence of this crime. And here, where a college student was allegedly raped by a TMCP leader and his 2 associates, and even the guard of the college was taken in confidence when the girl said, "Please open the door." He requested the guard, and the guard listened to the TMCP leaders, and he didn't open the gate, and he has been arrested right now. And the things that have been coming right now, these are more horrific, because the CCTV footage of the entire college premises has been captured in the mobile phone of Monojit Misra, who is the main accused in this entire case, and the 2 others are there, and they all have been arrested. But the thing is, how and in what respect they are getting this much of supreme power, that it has been allegedly said that even the principal and the vice principal are not that powerful as this Monojit Misra or these TMCP leaders are in the college premises. And now when the opposition leaders are asking things, when they are questioning, when they are raising where the democracy is in our state, they have been detained. Thank you so much, Vishakha, joining us with those details, viewers. Now, another shocker has come from another college campus. This is from India's premier institute, the IIT. A 20-year-old student sexually assaulted inside IIT Madras campus. The accused is a 22-year-old eatery worker who has now been arrested. The victim was attacked while walking alone. The man reportedly pulled her hair and harassed her. She managed to escape and alerted the campus security. The complaint has been filed against Roshan, who runs the Mumbai chaat shop inside the campus. Police have arrested him. In fact, viewers, I'm told that my colleague Sharda is joining us live on the broadcast for more on this. Sharda, well, we understand that this was a person who was working on the campus, and now there is an investigation underway. What are the latest updates on that? Well, the current update is that it is only Roshan, the accused, who is involved in this particular act, and the college administration has not reacted to the police. Are further investigating if there are any other complaints against Roshan given by any other female students. The incident happened on Thursday night.
following which yesterday the police arrested Roshan and also had taken a statement from the victim. The college released a statement stating that they would not accept any kind of sexual harassment inside the campus and they would make sure the necessary actions are taken. Also now the Student Federation Council protested outside IIT Madras stating that there should be more security provided inside universities that is situated in Chennai, especially the capital city of Tamil Nadu. This is not the first case that's happening in Chennai. We know recently the Anna University sexual harassment case and Jnana Sekharan, the only convict, was also given 30 years of prison with 25,000 rupees fine. So it's expected that the DMK would react to the ongoing sexual harassment cases that's going, especially inside the college, universities and school premises, and more security would be provided, Rakshita. Right. Thanks so much, Sharda, for joining us with those details coming in on that story. Now we shift our focus to the debate again on the preamble. Vice President Jagdeep Dhankar has stoked the debate. He has stirred the debate, which was in fact started by RSS yesterday. It's about the Constitution's preamble. During a public event, he pointed out that the preamble, which was thought to be unchangeable, was actually amended in 1976 during the emergency. Now, this comes amid the row triggered by RSS demand to remove the words socialist and secular, demand that has sparked fierce political clash. Listen in. आपने 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में डाला, 250 से अधिक पत्रकारों को उनको जेल में रखा, मौलिक अधिकारों का आपने हनन किया, 60 लाख भारत के लोगों को उनके स्टेरिलाइजेशन करने के लिए उनको मजबूर करके किया। इसी दिल्ली में क्या हुआ हम सब जानते हैं। जुडिशियरी की स्वतंत्रता को आपने समाप्त कर दिए। Constitution is encapsulated, its essence, its worth, its nectar in preamble of the Constitution. And what does it say? We the people of India. The supreme power is with them. No one is above the people of India. And we the people of India under the Constitution have chosen to reflect their aspirations, their desire, their will through their public representatives. And they hold these representatives accountable, severely accountable on occasions. Through elections, a Prime Minister who imposed emergency was held accountable in 1977. And therefore, let there be no doubt about it. Now, actor Shefali Jariwala, who shot to fame in the 2000s and popularly known as the Kanta Laga girl, now she passed away last night at the age of 42 in Mumbai. Her post-mortem has been completed. Mortal remains have reached her residence in Mumbai for the last rites. Now, a generation's nostalgia carries void. And in fact, we're getting in latest visuals from her residence. Also, many of her friends and family members have reached. Many of the celebrities who are connected to her have also reached. And now, viewers, what is the mystery behind this is something that is a matter of investigation. That at the age of 42, Shefali Jariwala passed away. Now, but she had a history of health issues. Now, one of them was epilepsy. She was suffering from epilepsy. She was suffering from epilepsy seizures since she was 15. Not just that, she also took a break from her career due to epilepsy struggles. She has said that in an interview that she could not really take on a lot of work because of epilepsy. And she was at the same time undergoing anti-aging treatment. And we've seen many celebrities who actually undergo plastic surgeries and also they take pills for anti-aging. She also had gone through depression. She's spoken about her episodes with the anxiety as well. And also she has experienced panic attacks in the past as per reports. All these facts as per the reports that have been gathered, because losing her life at the age of 42 is something that is being questioned and is really, really shocking, has sent shockwaves across the country. And of course brings us to the focus of how, and there's another death that has been reported at a very short time.
My colleague Satya Prakash joins us live on the broadcast for more. Satya Prakash, पोस्टमार्टम जो है वो समाप्त हो चुका है, क्या रिपोर्ट अभी जारी होनी है या जारी हो चुकी है? ताज़ा जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, पोस्टमार्टम हो चुका है और जो डॉक्टरों की प्राथमिक रिपोर्ट है, जो कि एक फैसला होता है, उसके बाद कोई स्पष्ट जानकारी मिलती है। बीएमसी के जो महानगर पालिका का जो कूपर हॉस्पिटल है, जहां पोस्टमार्टम हुआ है, वहां पे जो डॉक्टरेट टीम है, वो अभी कोई फैसला नहीं दिए हैं कोई स्पष्ट रूप से कि मौत की वजह क्या है। इंतजार किया जा रहा है कि जो प्राथमिक रिपोर्ट आएगी, आज देर रात तक हो सकता आएगी, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि शेफाली की मौत किस वजह से हुई। फिलहाल जो शेफाली का पार्थिव शरीर है, उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया है। वहीं मुंबई पुलिस का कहना है कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि क्या आता है, उसको देख रहे हैं। फिलहाल जो एहतियातन जो जांच था मुंबई पुलिस ने कर लिया है, कई लोग का बयान दर्ज कर लिया है, फोरेंसिक टीम ने कई चीज़ें कलेक्ट किया है। फिलहाल मुंबई पुलिस का कहना है कि हमने जो प्राथमिक जाँच है वो कर लिया है, अब इंतजार है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना। जी, बहुत शुक्रिया मैं जुड़ने के लिए सत्य प्रकाश for that information on that story. Because with that we come to the end of this edition of 6 Stories at 6. But don't go anywhere. We'll be getting you Prime Minister Modi's interaction with Group Captain Shubhanshu Shukla in space here at the ISS. We'll get you that interaction right after this short break. Don't go anywhere. $13,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। Hi, this is Chef Ranveer Brar. Guarantee you brilliance on behalf of IIT. आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। Enjoying the views, enjoying the entire experience of learning like a baby. मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है। जय हिंद, जय भारत। Hi, this is Chef Ranveer Brar. Guarantee you brilliance on behalf of IIT. दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान कैसी? आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। Axiom at Mission 4, welcome aboard the International Space Station.
Pilot Shubhanshu Shukla is the next one to come across, representing ISRO. It is his first space flight for Peggy Whitson, her return to the International Space Station on her 5th flight, second as a member of Axiom Space. Great big hugs and handshakes across all members of Expedition 73 and Axiom Mission 4's Anne McLean and Nicole Ayers of NASA, along with Johnny Kim, Kirill Peskov, Sergei Ryzhikov, and Alexei Zabritsky of Roscosmos, and Takuya Onishi, commander of Expedition 73 and of JAXA, with handshakes and hugs for Peggy Whitson, Shubhanshu Shukla, Sławosz Uznański-Wisniewski, and Tibor Kapu. And with their arrival to the International Space Station, that now makes 288 visitors to the orbiting laboratory. Has officially entered the International Space Station. Thank you for staying with us here on Republic TV. We are standing by for the Prime Minister's interaction with Group Captain Shubhanshu Shukla, who's India's first astronaut to reach the International Space Station, the first Indian on board the ISS. And the Prime Minister has had a long conversation with the Group Captain Shubhanshu Shukla in space for 14 days as part of Axiom 4. And we should be able to get that interaction live any second now. We are standing by for the video of the entire interaction between the Prime Minister and Group Captain Shubhanshu Shukla. Group Captain Shubhanshu Shukla on board Axiom Mission 4, a private spacecraft space program to the International Space Station, which is being operated by Axiom Space in partnership with SpaceX and NASA. It's a private space program which has used the SpaceX Falcon to place the Crew Dragon Grace into low Earth orbit. Maiden flight of the C-213 spacecraft Grace, the 5th and final Crew Dragon to be built, which was docked at the International Space Station a few days back. And Group Captain Shubhanshu Shukla is the pilot of this mission. The 4-member crew, which includes him, the pilot, Group Captain Shubhanshu Shukla, an Indian Air Force pilot, part of ISRO, representing India in Axiom 4, along with Peggy Whitson, the commander of the Axiom 4 mission, and Slaznov, Uznański, Wisniewski, and Tibor Kapu, Polish and Hungarian astronauts also on part of मातृभूमि से, नमस्कार, भारत भूमि से सबसे दूर है, लेकिन भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब है। आपके नाम में भी शुभ है और आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है। इस समय बात हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं भी हैं। मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग शामिल है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों की विशेष का। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत नया एक्सपीरियंस है ये। और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है। ये जो मेरी यात्रा है, ये पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है। बिकॉज जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। शुभ, आप दूर अंतरिक्ष में है जहां ग्रेविटी ना के बराबर है, पर हर भारतीय देख रहा है कि आप कितने डाउन टू अर्थ है। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीज़ें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और चखें, जो भारत का जो रिच कुलिनरी हमारा जो हेरिटेज है उसका एक्सपीरियंस ले। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में और सबको बहुत पसंद आया। कुछ लोग हैं कि कब वो नीचे आएंगे और हमारे देश आए और इनका स्वाद ले सके हमारे साथ। शुभ, परिक्रमा करना भारत की सदियों पुरानी परंपरा है। आपको तो पृथ्वी माता की परिक्रमा का सौभाग्य मिला है। अभी आप पृथ्वी के किस भाग के ऊपर से गुजर रहे होंगे? जी प्रधानमंत्री जी, इस समय तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं खिड़की से, विंडो से बाहर देख रहा था, तो हम लोग हवाई के ऊपर से गुजर रहे थे। और हम दिन में 16 बार परिक्रमा करते हैं, 16 सूर्योदय और 16 संन्यास, सनराइज और सनसेट हम देखते हैं ऑर्बिट से। और बहुत ही अचंभित कर देने वाला ये पूरा प्रोसेस है। इस परिक्रमा में, इस तेज गति में, हम इस समय करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं आपसे बात करते वक्त। और ये गति पता नहीं चलती क्योंकि हम तो अंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गति जरूर दिखाती है कि हमारा देश कितनी गति से आगे बढ़ रहा है इस समय, कि हम यहाँ पहुंचे हैं और अब यहाँ से और आगे जाना है। अच्छा शुभ, अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या आया आपको? प्रधानमंत्री जी, सच में बोलूं तो जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे, अंतरिक्ष में पहुंचे, तो पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था। और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है। मतलब बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता। और दूसरी चीज जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है, हमारा आकार कैसा है, वो मैप पे देखते हैं। लेकिन वो सही नहीं होता क्योंकि वो एक हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है, जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा। और जो वननेस की फीलिंग है, पृथ्वी की वननेस की फीलिंग है, जो हमारा भी मोटो है कि अनेकता में एकता, वो बिल्कुल उसका महत्व ऐसा समझ में आता है बाहर से देखने में कि लगता है कि कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई राज्य नहीं एग्जिस्ट करता, कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती। फाइनली हम सब ह्यूमैनिटी का पार्ट है और अर्थ हमारा एक घर है और हम सब के सब उसके सिटीजन्स हैं। शुभांशु, स्पेस स्टेशन पर जाने वाले आप पहले भारतीय हैं। आपने जबरदस्त मेहनत की है, लंबी ट्रेनिंग करके गए हैं। अब आप रियल सिचुएशन में है, सच में अंतरिक्ष में है। वहां की परिस्थितियां कितनी अलग हैं, कैसे एडप्ट कर रहे हैं?
यहाँ पे तो सब कुछ ही अलग है प्रधानमंत्री जी। ट्रेनिंग की हमने पिछले पूरे 1 साल में। सारे सिस्टम्स के बारे में मुझे पता था, सारे प्रोसेस के बारे में मुझे पता था, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मुझे पता था, लेकिन यहाँ आते ही सडनली सब चेंज हो गया। बिकॉज हमारे शरीर को ग्रेविटी में रहने की इतनी आदत हो जाती है कि हर एक चीज उससे डिसाइड होती है। पर यहाँ आने के बाद चूंकि ग्रेविटी माइक्रो ग्रेविटी है, एब्सेंट है, तो छोटी छोटी चीजें भी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अभी आपसे बात करते वक्त मैंने अपने पैरों को बांध रखा है, नहीं तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। और माइक पे भी जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, इसको छोड़ भी दूं तो भी ये ऐसे फ्लोट करता रहता है। पानी पीना, पैदल चलना, सोना बहुत बड़ा चैलेंज है। आप छत पे सो सकते हैं, आप दीवारों पे सो सकते हैं, आप जमीन पे सो सकते हैं। तो पता सब कुछ होता है प्रधानमंत्री जी। ट्रेनिंग अच्छी है, लेकिन वातावरण चेंज होता है तो थोड़ा सा यूज्ड टू होने में 1-2 दिन लगते हैं, बट फिर ठीक हो जाता है। भारत की ताकत साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों है। आप अंतरिक्ष यात्रा पर हैं, लेकिन भारत की यात्रा भी चल रही होगी। भीतर में भारत दौड़ता होगा। क्या उस माहौल में मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का लाभ भी मिलता है क्या? जी प्रधानमंत्री जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि भारत ऑलरेडी दौड़ रहा है, और ये मिशन तो केवल एक पहली सीढ़ी है उस एक बड़ी दौड़ का। और हम जरूर आगे पहुंच रहे हैं, और अंतरिक्ष में हमारे खुद के स्टेशन भी होंगे और बहुत सारे लोग पहुंचेंगे। और माइंडफुलनेस का भी बहुत फर्क पड़ता है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं नॉर्मल ट्रेनिंग के दौरान भी या फिर लॉन्च के दौरान भी, जो बहुत स्ट्रेसफुल होती हैं, और माइंडफुलनेस से आप अपने आप को उन सिचुएशंस में शांत रख पाते हैं, और अपने आप को काम रखते हैं, अपने आप को शांत रखते हैं, तो आप अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। कहते हैं कि दौड़ते हुए भोजन कोई भी नहीं कर सकता, तो जितना आप शांत रहेंगे उतना ही अच्छे से आप डिसीजन ले पाएंगे। तो आई थिंक माइंडफुलनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन चीज़ों में। तो दोनों चीज़ें अगर साथ में प्रैक्टिस की जाएं तो ऐसे एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में या चैलेंजिंग वातावरण में मुझे लगता है ये बहुत ही यूजफुल होंगी, और बहुत जल्दी लोगों को अडेप्ट करने में मदद करेंगी। आप अंतरिक्ष में कई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आने वाले समय में एग्रीकल्चर या हेल्थ सेक्टर को फायदा पहुंचाएगा? जी प्रधानमंत्री जी, मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों ने 7 यूनिक एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए, जो कि मैं अपने साथ स्टेशन पे लेके आया हूं। और पहला एक्सपेरिमेंट जो मैं करने वाला हूं, जो कि आज ही के दिन में शेड्यूल्ड है, वो है स्टेम सेल्स के ऊपर। अंतरिक्ष में आने से क्या होता है कि ग्रेविटी चूंकि एब्सेंट होती है तो लोड खत्म हो जाता है, तो मसल लॉस होता है। तो जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो ये देख रहा है कि क्या कोई सप्लीमेंट दे के हम इस मसल लॉस को रोक सकते हैं या फिर डिले कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन धरती पे भी है कि जिन लोगों का मसल लॉस होता है ओल्ड एज की वजह से, तो उनके ऊपर ये सप्लीमेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली वहाँ यूज़ हो सकता है। साथ ही साथ जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो माइक्रो एल्गी की ग्रोथ के ऊपर। ये माइक्रो एल्गी बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। तो अगर हम इनकी ग्रोथ देख सकते हैं यहाँ पे, और ऐसा प्रोसेस इजाद करें कि ये ज़्यादा तादाद में हम इन्हें उगा सकें और न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड कर सकें, तो कहीं ना कहीं ये फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत काम आएगा धरती के ऊपर। सबसे बड़ा एडवांटेज जो है स्पेस का वो ये है कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पे बहुत जल्दी होते हैं, तो हमें महीनों तक या सालों तक वेट करने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए यहाँ के जो रिजल्ट चंद्रयान की सफलता के बाद देश के बच्चों में, युवाओं में विज्ञान को लेकर एक नई रुचि पैदा हुई। अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने का जज्बा बढ़ा। अब आपकी ऐतिहासिक यात्रा उस संकल्प को और मजबूती दे रही है। आज बच्चे सिर्फ आसमान नहीं देखते, वे यह सोचते हैं मैं भी वहां पहुंच सकता हूं। यही सोच, यही भावना हमारे भविष्य के स्पेस मिशंस की असली बुनियाद है। आप भारत की युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे?
प्रधानमंत्री जी, अगर मैं अपने युवाओं पीढ़ी को आज कोई मैसेज देना चाहूँगा तो पहले ये बताऊँगा कि भारत जिस दिशा में जा रहा है, हमने बहुत बोल्ड और बहुत ऊंचे सपने देखे हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें आप सबकी ज़रूरत है। तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैं ये कहूँगा कि सक्सेस का कोई एक रास्ता नहीं होता कि आप कभी कोई एक रास्ता लेता है, कोई दूसरा रास्ता लेता है, लेकिन एक चीज़ जो हर रास्ते में कॉमन होती है वो ये होती है कि आप कभी कोशिश मत छोड़िए, नेवर स्टॉप ट्राइंग। अगर आपने ये मूल मंत्र अपना लिया कि आप किसी भी रास्ते पे हो, कहीं पे भी हो, लेकिन आप कभी गिव अप नहीं करेंगे तो सक्सेस चाहे आ जाए या कल आए पर आएगी जरूर। मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी ये बातें देश के युवाओं को बहुत ही अच्छी लगेगी और आप तो मुझे भली भांति जानते हैं, जब भी किसी से बात होती है तो मैं होमवर्क जरूर देता हूं। हमें मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है, हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है और चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। इन सारे मिशंस में आपके अनुभव बहुत काम आने वाले हैं। मुझे विश्वास है आप वहां अपने अनुभवों को जरूर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जी प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल। ये पूरा मिशन की ट्रेनिंग लेने के दौरान और एक्सपीरियंस करने के दौरान जो मुझे लेसन्स मिले हैं, जो मुझे सीख मिली है, वो सब एक स्पॉन्ज की तरह मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यूएबल प्रूव होंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी हमारे लिए जब मैं वापस आऊँगा और हम इन्हें इफेक्टिवली अपने मिशंस में इनके लेसन्स अप्लाई कर सकेंगे और जल्दी से जल्दी उन्हें पूरा कर सकेंगे। बिकॉज मेरे साथी जो मेरे साथ आए थे, कहीं ना कहीं उन्होंने भी मुझसे पूछा कि हम कब गगनयान पे जा सकते हैं, जो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बोला कि जल्दी ही। तो मुझे लगता है कि ये सपना बहुत जल्दी पूरा होगा और मेरी जो सीख मुझे यहाँ मिल रही है वो मैं वापस आके उसको अपने मिशन में पूरी तरह से 100% अप्लाई करके और उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। शुभांशु, मुझे पक्का विश्वास है कि आपका ये संदेश एक प्रेरणा देगा और जब हम आपके जाने से पहले मिले थे, आपका परिवारजन के भी दर्शन करने का अवसर मिला था और मैं देख रहा हूं कि आपके परिवारजन भी सभी उतने ही भावुक है, उत्साह से भरे हुए हैं। शुभांशु, आज मुझे आपसे बात करके बहुत आनंद आया। मैं जानता हूं आपके जिम में बहुत काम है और 28,000 किलोमीटर की स्पीड से काम कर रहे हैं आपको, तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। आज मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये भारत के गगनयान मिशन की सफलता का पहला अध्याय है। आपकी यह ऐतिहासिक यात्रा सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है, यह हमारी विकसित भारत की यात्रा को तेज गति और नई मजबूती देगी। भारत दुनिया के लिए स्पेस की नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहा है। अब भारत सिर्फ उड़ान नहीं भरेगा, भविष्य में नई उड़ानों के लिए मंच तैयार करेगा। मैं चाहता हूं, कुछ और भी सुनने की इच्छा है आपके मन में, क्योंकि मैं सवाल नहीं पूछना चाहता, आपके मन में जो भाव है अगर वो आप प्रकट करेंगे, देशवासी सुनेंगे, देश की युवा पीढ़ी सुनेगी, तो मैं भी खुद बहुत आतुर हूं कुछ और बातें आपसे सुनने के लिए। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। यहाँ ये पूरी जर्नी जो है ये अंतरिक्ष तक आने की और यहाँ ट्रेनिंग की और यहाँ तक पहुँचने की, इसमें बहुत कुछ सीखा है प्रधानमंत्री जी मैंने। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद मुझे पर्सनल एकम्प्लिशमेंट तो एक है ही, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा कलेक्टिव अचीवमेंट है। और मैं हर एक बच्चे को जो ये देख रहा है, हर एक युवा को जो ये देख रहा है, एक मैसेज देना चाहता हूँ और वो ये है कि अगर आप कोशिश करते हैं और आप अपना भविष्य बनाते हैं अच्छे से, तो आपका भविष्य अच्छा बनेगा और हमारे देश का भविष्य अच्छा बनेगा। और केवल एक बात अपने मन में रखिए, दैट स्काई इज नेवर द लिमिट,
ना आपके लिए, ना मेरे लिए और ना भारत के लिए। और ये बात हमेशा अगर आपने मन में रखी तो आप आगे बढ़ेंगे, आप अपना भविष्य उजागर करेंगे और आप हमारे देश का भविष्य उजागर करेंगे। और बस मेरा यही मैसेज है प्रधानमंत्री जी। और मैं बहुत ही भावुक और बहुत ही खुश हूं कि मुझे मौका मिला आज आपसे बात करने का और आपके थ्रू 140 करोड़ देशवासियों से बात करने का। जो ये देख पा रहे हैं, ये जो तिरंगा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यहाँ नहीं था। आज कल के पहले जब मैं यहाँ पे आया हूँ तब हमने ये यहाँ पे पहली बार लगाया है। तो ये बहुत भावुक करता है मुझे और बहुत अच्छा लगता है देख के कि भारत आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुका है। शुभांशु, मैं आपको और आपके सभी साथियों को आपके मिशन की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। शुभांशु, हम सबको आपकी वापसी का इंतजार है। अपना ध्यान रखिए, मां भारती का सम्मान बढ़ाते रहिए। अनेक अनेक शुभकामनाएं, 140 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं और आपको इस कठोर परिश्रम करके इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, धन्यवाद। और सारे 140 करोड़ देशवासियों को धन्यवाद। और स्पेस से सबके लिए भारत माता की जय। आज मातृभूमि से, नमस्कार, भारत भूमि से सबसे दूर है, लेकिन भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब है। आपके नाम में भी शुभ है और आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है। इस समय बात हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं भी हैं। मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग शामिल है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों की विशेष का। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ, आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत नया एक्सपीरियंस है ये। और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है। ये जो मेरी यात्रा है, ये पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है। बिकॉज जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ। धन्यवाद प्रधानमंत्री। शुभ, आप दूर अंतरिक्ष में है, जहां ग्रेविटी ना के बराबर है, पर हर भारतीय देख रहा है कि आप कितने डाउन टू अर्थ है। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीज़ें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और चखें, जो भारत का जो रिच culinary हमारा जो हेरिटेज है उसका एक्सपीरियंस लें।
Very warm welcome on behalf of Republic Media Network as we gather for this very, very special edition of Legends. What really defines a true maestro? Is it mastery over an instrument, or is it the ability to turn music into meditation? Is it virtuosity or the power to still a room with a single note? Tonight, ladies and gentlemen, we honor a man who has done all of this and more. The sarod in his hands becomes an extension of silence. His music, a dialogue with divinity. He has taken Indian classical music from intimate gatherings to the grandest stages. He has performed for presidents, popes, and prime ministers, yet never stopped performing for the soul. Padma Vibhushan, Padma Shri, UNESCO awardee, global cultural ambassador, but above all, a guru, a storyteller, and a torchbearer of India's legacy, India's musical legacy. And this evening, we are privileged to begin not with words, but with music. So ladies and gentlemen, please join me in welcoming the legend himself, Ustad Amjad Ali Khan, for a special performance to begin today's celebration. Namaskar. Welcome, all of you. It's a very special occasion for all of us. We are here to give tribute to my friend, Mr. Arnab Goswami, for his achievements, and Republic TV. We are very proud of him. I would like to dedicate this concert to the world peace. All the time we are praying to God Almighty. There should be peace all over the world. Please welcome my tabla player, Pandit Mithilesh Kumar Jha. Generally, we play rag for a long time. I have performed from 9 p.m. to 7 in the morning in Kolkata. But today, I will just play a few compositions which are very familiar to you. Some are devotional songs, some are patriotic songs, but you are all aware, you will recognize them. So every song, every piece of melody is based on some raga or the other. The first piece is based on rag Desh. You will recognize the song. Thank you very much.
Next piece is based on Rag Khamaj, and I have played many times on several occasions, Mahatma Gandhi's birthday and several other occasions of India's independence. Vaishnav Janato, most favorite song of Mahatma Gandhi.
I will conclude with a beautiful song composed by Gurudev Rabindranath Tagore, Ekla Chalore, and also a folk tune from Assam, from where my wife comes, Subhlakshmi ji, and Mr. Arnab Goswami is also from Assam, Bihu. So you will see the change from folk music of Bengal and folk music of Assam. Thank you very much.
ancient instrument of our country was veena. Veena, yeah. What veena could not express, sitar was created. Sitar is also a Persian word. Okay. Sehtar, teen tar ka baja. And my forefathers, they played rabab. Rabab still exists in Afghan rabab. Afghanistan, Central Asia, Kashmir, everywhere. So rabab has gut string. Okay. So the strings were changed. Co-powered by Century Ply Club Prime. Raho befikar. 13,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। पहाड़ों में एक हाइकिंग शिप भी बन सकती है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। $13,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबां कैसी? MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। Thank you so much for that movie with the Sarod. And in those few moments, we were reminded that music, when played with purity, does not entertain, it elevates. It elevates the soul. And now, as we continue this special evening, we turn from performance to reflection. It is my honor to invite back on stage Ustad Amjad Ali Khan Sahab, and joining him for a conversation that promises insight, inspiration, and legacy. Please welcome the Editor-in-Chief of Republic Media Network, Mr. Arnab Goswami. First of all, very warm welcome to the Republic Media Network campus. Thank you so much. And to meet you and to have you here is a dream come true for all of us. You are like a father figure to me, and you have been like a father figure for a very long time. I would like to start by saying that I'm privileged to have what I would say is a personal association with you. Yes. And your beautiful family. And a personal association with Subbalakshmi ji, who is becoming more and more charming every time I meet her. And she is the pillar of strength behind Khan Sahab. And we are very honored to have you, ma'am, with us. I'm very honored to know you. She is a very well-known Bharatnatyam exponent and the strength behind Khan Sahab. So we are very happy to meet you. And on behalf of everyone in my family and the Republic Media Network, a very warm welcome to you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. We are so proud of you. We have seen your struggle days, your journey, and how beautifully you created your own world. We are really very, very happy and proud of you, and I hope you live for 100 years.
So thank you very much, sir. Sir, Khan Saab, I'll call you Khan Saab. Because Khan Saab, I am inadequate to interview you because I do not have any depth of understanding of your music. Your music elevates us when we listen to you. And more than that, I can say that when we see you on stage, I can say this, that of the greatest maestros in the world, when they are in their musical zone, I was just saying to Subbalakshmi ma'am that they are in a different frame of mind. They are in a different mind space. So when I see the videos, I've never been able to ever see a live performance of Ravi Shankar ji. But I used to see him with his sitar. And I saw even one of his last performances, he's totally in that zone. When you see Zubin Mehta conducting, he's in his zone. So, though I cannot ask you musical questions, I would like to begin by asking you that when you are performing, you are in a different frame of mind. It seems as if everything around you is still and you are only with your music. So tell us all about the frame of mind which you go to and how that happens. Because there are many people here who are practicing music, love music, they would want to know that side, the backstory. There's a lot of knowledgeable people sitting here. No, sir. Compared to you, we have nothing. You see, in our country, we say Swar hi Ishwar hai. That music connects you to God. And music is a precious gift of God. Music has connected the world. Music does not belong to any religion, like flowers, air, water, fire, fragrance, colors. So we have to learn with the role of flowers. Every religion needs flowers. And Indian classical music, we don't write music, we don't read music. Western world, they read music, they write music. It's the composition of Beethoven or Bach or Mozart. It's a contribution of three people: composer, conductor, and performer. But we Indian musicians, we are three in one. When I'm performing, I'm the composer, I'm the conductor, I'm the performer. But I think there is a conductor somewhere else up there. Explain that. Somebody is conducting me. Somebody is sending the messages. I'm just transmitting. I'm a messenger only. And I don't use the language. It's just my connection with the world is entirely, purely with the sound only. Because through sound, I can manipulate. If I'm out of tune, you will come to know. But through language, the world is ruling. The language is a very, very, very big weapon, a very big communication. Everybody can't communicate. I can't communicate the way you communicate. But I only communicate through sound, through music only. So you don't have to understand music. You have to appreciate, you have to give yourself to sound and rhythm. You see, I was never good in my school. I was not good in mathematics. On paper, I was a bad student. I could not pass mathematics. But in my music, I was using mathematics. All that, this is all mathematics. So I could do that. So we create castles in the air. We create all the beautiful things, imagination. You see, you can't see music, you can't see rhythm, like you can't see God. So it's a precious gift of God. I'm grateful to God that I'm born in the family of musicians. And I'm very grateful to my wife, Subbalakshmi. She has given Aman, Ayan in our life. And now they are taking care of me. Because at this age, generally people retire. A lot of people at the airport sometimes they ask me, आप अभी भी बजाते हैं क्या? मैंने यार सुन रहे हैं लोग सुन रहे हैं तो मैं बजा रहा हूँ. So we don't have an age of retirement, but
I am performing today because of my family, because of my wife, Aman, and fortunately, by the grace of God, I have grandchildren, Abir and Zuhan, they are 12 years old, and my daughter-in-law, Neema Sharma. So Ayan is taking care of his children, but everybody is helping me to give my best to the world. That's so wonderful. Ansab, you are now, you would be 8 generations, 5 before you, and now 2 after you. So that would make it, would that make it 8 generations of musicians? Is it also 8 generations of Sarod? You see, Sarod was invented from our family. My forefathers, as you know, they came from Afghanistan, settled in Madhya Pradesh, Rewa, Maharaja Rewa Vishwanath Singh Ji. Then finally, they were the court musicians in Gwalior, Sindhya Parivar. So we are the followers of Mia Tansen. You know, the Tansen's guru was Swami Haridas. So we are the humble representative of Mia Tansen. And Tansen was born in Gwalior, his grave is in Gwalior. And our family house where I was born is in Gwalior. It has been converted into a museum now. It's called Sarod Ghar. And it has all the instruments of my forefathers, many great musicians, they have donated their instruments there. And my childhood instruments are also there. So we are, our gharana is called Senia Beankar Gharana. Okay. So, generation or legacy is only possible when the children realize their responsibility. So we are very fortunate that Aman has created his own world as a Sarod player. Ayan has created his own world. And my grandchildren, they are enjoying to share the stage and they are traveling with us. Their greatest attraction is the aeroplane, I think. Which aircraft they are flying, which aircraft they are traveling. So Aman discuss and Aman explain all the technical parts of the aircraft. So I'm very happy that everybody, we eat music, we breathe music. Music is our life. And music has also taught that my audience comes from diverse background, different religion, different. I feel I belong to every religion of the world. I feel I belong to every religion of India. So my life is music. So I'm very grateful to God Almighty. That's amazing. I see those beautiful pictures there of you with your grandchildren, right there behind you. Yes, yes. Do they have stage fright when they are performing with you? Are your grandchildren worried when they perform with you? Or as I mentioned to you, you seem to be training them everywhere. See that all picture the hard work Ayan has done. At the time of COVID, they were all sitting at home. Okay. The schools were shut. So Ayan started teaching them, and Neema has given a lot of time to them. Sometimes they come to me also. They call me Dada Abba and Dadi Aita. Aita, you know, Dadi Aita. So they are enjoying traveling with us. They are enjoying. They are also watching Michael Jackson and Justin Bieber and BTS. They are fond of football. They introduced me to Ronaldo and Messi and all those players. I never knew who is Ronaldo. So they are involved in wildlife also. They exactly know how many tigers are there in Madhya Pradesh, how many tigers in Ranthambore. So, but at the time when we ask them to play, they practice, they come. And I told you when, after their first concert in Delhi, we performed for 15 minutes. That was the first time they faced the audience. And it was some very important event. It was live telecast and Vice President was the chief guest. Next day, one of my grandson, Zohan, he asked me, Dada Abba, हमारा अगला program कब है? मैंने कहा बेटा मुझे अपना नहीं पता मैं आपका कैसे बताऊंगा? So there, you know, sometimes you have a stage fright. You are afraid to face the audience.
but they are enjoying. They need blessings and good wishes of all of you. Well, I mean, you know, we go back 40 years, and 40 years back and 40 years even now. I don't know. I was asking ma'am that Khan Sahib has a great female fan following. For half a century he has had a female. And I asked her, how do you handle it? She said it is his problem. I always have the remote. That's amazing. I saw you there. You must have a very good remote. You make sure the batteries always work with him. But he's such a charmer. So wonderful. I saw her performance in Calcutta. When did you first meet? I saw her Bharatnatyam performance in Kolkata. You saw her performance for the first time? It was a festival where I was also performing, and many great musicians were performing. And I was in a disturbed frame of my mind in 70s, and traveling and performing. And watching her performance, I thought God has sent her for me. That thought came to my mind. And then I tried to meet her and the family. The rest is history, but her guru, legendary Rukmani Arundel, who created Kalakshetra, she gave a reception after our marriage. So we went to Chennai and we received, fortunately, we received blessings from all the senior people, my in-laws, Mr. P.C. Barua, Mr. Parsuram Barua. So this is what India is. Beautiful, sir. Next year you celebrate your golden jubilee anniversary of your wedding, golden anniversary. So I wish you the best in advance for that. We have some beautiful messages from people who love you. And our first message is from your elder son, Aman Ali Bangash, who is also a friend of mine. Both your sons are good friends of mine. I love them both. So let's hear what your disciple and your son has to say about you. Can we play that video, please? Aman's video, please. Thank you. You can see it here. Okay. Hansa, it will play there. Adab, Namaste Abba, how are you? It's an honor for me to be here and speaking to you. आपके बारे में क्या बोलूँ? What can I say about you? I'm very blessed to have a father, a guru like you, and a friend like you. I must have done very good karmas to be born to this family and to have you as my father. I want to say thank you to you for everything that you have done and you keep doing for Ayan Bhai and me. And I say this with a lot of humility and also with a lot of pride that if I was not your son, if I was not born as your son, as a musician, I would have taken another 70, 80 years to accomplish myself in my profession. Thanks to you that I got the love and goodwill of everybody. And I'm very fortunate to be born as your son and Ma's son. And love you, Abba. Very proud of you for what you have done to music, to Sarod, and to humanity around you. And I always remember that you've always told me this, that more than a musician, be a good human being. And I'm trying to do that. And I promise you, I'm going to make you really proud very soon with all my efforts. Love you. I think that, you've got the Padma Shri, you've got the Padma Bhushan. You've also been, Khan Sahib is also Padma Vibhushan. It's the highest honor that a person can get in this country. But I think this is one of your greatest achievements. Yes, I'm very more than all your awards. Grateful to God that, the day children become responsible, when they realize the responsibility of their gharana, their family. So they are very hardworking, struggling, hardworking young musicians, and they are receiving love and blessings from all over the world. We have just completed about 3 months tour to USA, and we feel so proud all over the world. The achievers, NRI, whatever they have achieved, and they are sitting in America now. They have realized the value of Indian classical music. Yes, you think that's happening now? It happens. It always happens. In Because India, there was a fear